Today I'm going to discuss a very important questions which is asked in or which may ask in upcoming judiciary exam in GS paper and in CLAT. So these are the some questions on the basis of the landmark, some judgments of the Supreme Courts in the various courts, which are you can consider as a legal GK, and there are a maximum chances of these question. मतलब इन क्वेश्चनों के आने के बहुत ज्यादा चांस है, क्योंकि दीज ऑल आर द लैंडमार्क जजमेंट जिनके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जिनके बारे में डिसीजन दिया. सो प्लीज गो थ्रू दी जजमेंट्स बिफोर अटेम्प्टिंग एनी क्वेश्चन, एंड प्लीज it is a series, and please share, subscribe with your friend for the more knowledge, and don't escape. Try to watch full video because it is the best questions, which is whose probability to come in exam is 100%. In which of the following, now the first question is, in which of the following cases section 66A of the IT Act was struck down? मतलब जो धारा 66A थी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की, वो किसमें स्टक डाउन हुई है? तो ये आपका actually it is the Supreme Court in a landmark judgment struck down section 66A of the Information Technology Act 2000, which provided provision for the arrest of those who posted allegedly offensive content on the internet, holding freedom of expression. ठीक है, तो section 66A defined the punishment for a sending offensive message through a computer or any other communication device like a mobile phone or a tablet, and a conviction of it can fetch a maximum 3-year jail and a fine. तो ये सारी जो थी, ये सारी बात कहाँ कही गई थी? ये बात कही गई थी आपकी श्रेया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में. ठीक है, नाउ द क्वेश्चन नंबर 2. Question number 2. In which of the following cases Supreme Court gave a legal recognition to the third gender? मतलब थर्ड जेंडर को लीगल रिकॉग्निशन कब की थी? इसमें व्हाट इज द रीजनिंग बिहाइंड दिस केस? द सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या था, नेशनल जो नालसा है हमारी, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है, has given a legal recognition to the transgender community by mandating that they be treated as a third gender and thereby doing away with the binary understanding of the gender. So the correct option is your option number D. This is the very famous, very landmark judgment. After this judgment, there are various states made a reservation for the third gender. Okay. Now the question number 3. In which case the 42nd Amendment Act were declared as a null and void by the Supreme Court? It's a very important, very important. I think I have to go little. मेरे को हिस्ट्री में जाना चाहिए इसमें बिफोर अटेम्प्टिंग दिस क्वेश्चन. इसमें क्या हुआ था? 42nd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ऑफिशियली नोन एज द कॉन्स्टिट्यूशन 1976, was enacted during the emergency, and 25 June 1975 to 21st March 1977 by the Indian National Congress government headed by Indira Gandhi. ठीक है, this amendment brought about the most widespread changes to the constitution in history and is sometimes called a mini constitution. ठीक है, or the constitution of India. The radical changes through in Indira Gandhi were neutralized by holding them unconstitutional in Minerva Mill judgment. ठीक है, इसमें क्या हुआ था कि जो 42nd अमेंडमेंट हुई, तो ये किसने की थी? इंदिरा गांधी ने. ठीक है, इंदिरा गांधी इसमें इतनी ज्यादा अमेंडमेंट कर दी कि इसको एक छोटा कॉन्स्टिट्यूशन बोले जाने लगा. ठीक है, तो उस चीज को खत्म करने के लिए इसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने मिनेर्वा मिल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में 42nd अमेंडमेंट को डिक्लेयर कर दिया नल एंड वॉइड. ठीक है, नाउ द क्वेश्चन नंबर 4. विच केस, let me again tell you, these are the very important question. Never skip this video because try to memorize thoroughly so that you can remember. So many people suggest you कि जब भी अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो तो ABC में प्रैक्टिस करो, वो करो. The basic idea behind to attempt the MCQ is the only one. You must have a deep knowledge. If you have a knowledge, then you can find out. Now next question number 4. Which case laid down the basic structure doctrine? The case of Keshwananda Bharti versus State of Kerala
is perhaps the most well-known constitutional decision of the Supreme Court of India, while ruling that there is a no implied limitation on the power of a parliament to amend the constitution. ठीक है? It held, इसमें क्या हुआ था कि amendment can do violence to its basic structure. Further, Supreme Court ने बोला कि right of a review and therefore established its supremacy constitutional matter as correct option is your Keshav Nanda Bharti versus State of Kerala. इसमें ये बोला कि जो बेसिक स्ट्रक्चर जो है, जो अमेंडमेंट जो है बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब ना करे। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ए। Which case laid down the guideline for sexual harassment at workplace? I think everybody know this is the case of the Vishakha versus Rajasthan. इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी थी कि वर्क प्लेस में आपकी सेक्सुअल हरासमेंट के बारे में क्या क्या आपकी वहां पे रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। द कोर्ट लेड डाउन अ बेसिक गाइडलाइन फॉर पावर ऑफ अ प्रेसिडेंट रूल इन। अब जो प्रेसिडेंट रूल जो लगता है उसके रिगार्डिंग जो है कोर्ट ने जो गाइडलाइन किस केस में जारी की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर है आपका एसआर बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। एसआर बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो आर्टिकल 356 है आपका, ठीक है, उसके बारे में डिटेल डिस्कस किया हुआ है। जस्ट यू हैव टू रिमेंबर कि प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल 356 और रिगार्डिंग द imposition of the president rule is and the detailed discussion and the guideline how to enforce it. It is under by the SR Bomai versus Union of India case. The court held that Jat reservation is unconstitutional in which case it is a Ram Singh versus Union of India. ठीक है, Ram Singh versus Union of India. Basically, most of the these cases are arises after the revolution in the Haryana by the Jat community. So, try if you want to memorize this case regarding the Jat. Most of the Jats जो नाम होते हैं उनके नाम के पीछे राम जरूर या पहले राम जरूर लगा रहता है। तो so you can read Jat reservation to the Ram Singh versus Union of India. It's a my trick. You can also develop a new trick. Now the next question number 8. In which case the Supreme Court upheld constitutional validity of a section 139AA of an Income Tax Act which made mandatory linkage of IT returns with Aadhaar subject to the outcome of the main case related to Aadhaar? Actually, it is the option number B, Vishwam Som versus Union of India. Vishwam Som versus Union. इस केस में क्या हुआ था, इसमें जो द पार्लियामेंट ने जो फुली कॉम्पिटेंट टू इनेक्ट सेक्शन 139AA, ठीक है, एंड अथॉरिटी टू मेक लॉ वाज नॉट डाइल्यूटेड बाय द ऑर्डर ऑफ दिस कोर्ट. कोर्ट डिड नॉट फाइंड एनी कंफ्लिक्ट बिटवीन द प्रोविजन ऑफ आधार एक्ट एंड सेक्शन 139A. कोर्ट ने बोला कि कोई भी इसमें आपस में कोई खिंचातानी नहीं है 139AA और आधार एक्ट में. So the section 139 act is not a discriminatory, nor does not an equality clause enshrined in article 40. मतलब और जो हमारी अनुच्छेद 14 है संविधान का, उसके तहत जो है ये जो 139A है, ये कोई भी जो है आपका किसी को भी कोई हानि नहीं पहुंचाता किसी तरीके से. सो विश्वा सोम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में आपका जो है आर्टिकल सेक्शन 139A of the income tax act is your held valid. Now the question number 9. In which case the Haryana Panchayati Raj Amendment Act 2015 was challenged under Article 14 of the Constitution of India. The Supreme Court of India dismissed the challenge and upheld the constitutionality of the act. Now the question number 9 में इसमें ये जो है आपका actually what happened in this case, इसमें main issue the issue behind the court, जो issue कोर्ट ने क्या डिसाइड करना था वो था कि इन्होंने मिनिमम एजुकेशन को वहां पे अमेंड किया था पंचायती राज एक्ट में, मेड टू द मिनिमम, मतलब प्रिस्क्राइब की थी कि ये मिनिमम एजुकेशन होनी चाहिए. बट सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं, ऐसा नहीं हो सकता. सो इसकी जो वैलिडिटी है पंचायती राज अमेंडमेंट एक्ट की, दैट इज वैलिड. सो द करेक्ट ऑप्शन इज योर, इट इज हैपनिंग राजबाला वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा. ठीक है, करेक्ट ऑप्शन इज योर राजबाला वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which case
Question number 10. Which case led to the imposition of emergency and was a landmark case regarding the election dispute? The primary issue was the validity of a clause 4 of the 39th Amendment. I think nobody unaware about this case. It's a Raj Narayan versus Indira Gandhi case. It is the case Raj Narayan versus Indira Gandhi case because in this case Indira Gandhi, Raj Narayan fought election against the sitting Prime Minister Indira Gandhi, and he won this election. So this is the very famous case, and it led to the 39th Amendment. In which landmark case the Supreme Court held that the second marriage of the Hindu is invalid even if he converts. देखिए, these are the some cases which when the students who are attempting a CLAT examination or who will pursue LLB or CA, then this case is such a landmark. It will found you will see this case in Hindu law, especially in a Hindu Marriage Act, Sarla Mudgal case. So go through this case. इसमें कुछ नहीं, इसमें इतना सा हुआ था कि इसका जो पति था, इसमें जो है उसने पहले एक शादी की, फिर उसने दूसरी शादी के लिए कन्वर्ट हो गया, वो मुस्लिम में, फिर उसने शादी की. तो दिस इज द offense of bigamy and it is invalid. This conversion is not valid. ठीक है? So the correct option is B. Now the question number 12. In which landmark legal case it was held that the preamble is not a part of the Indian Constitution? Very, very important question. And it's I think everybody aware it's a Beruveri versus Union of India, where it was held that the preamble is not a part of the Indian Constitution. And this, it was held that the preamble is not part of the Constitution. This judgment was overruled. देखिए, ये जजमेंट फिर ओवररूल कब हुई? ये जो केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस में है, 13 जजेस बेंच ने जो है इसमें बोला कि इट वाज हेल्ड दैट द प्रीएम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है? देखो बेरुवरी केस में क्या बोला? इट इज नॉट अ पार्ट. करेक्ट आंसर इज योर बी एज पर योर क्वेश्चन, बट फॉर योर बेटर जीके आई एम टेलिंग यू, मैं बता रहा हूं कि केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में 13 जजेस की बेंच ने बोला कि नो, इट्स अ part of the constitution. It's a matlab preamble is a part of the constitution. Now, in which of the landmark case the Supreme Court held that a parliament has the right to amend the fundamental right enshrined in the question. ठीक है? मतलब क्वेश्चन ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने किस में बोला कि दैट पार्लियामेंट को राइट है फंडामेंटल राइट को भी अमेंड करने के लिए. तो ये था आपका शंकरी प्रसाद में बोला. अब देखिए बेसिकली व्हाट इज द पर्पस. शंकरी प्रसाद में जब बोला इन्होंने कि आप फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकते हो, तो इट मींस यू कैन डिस्टर्ब द बेसिक स्ट्रक्चर. ठीक है? तो ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब करने के लिए किस में केस में बोला गया. तो दैट इज शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14. इन विच लैंडमार्क केस fundamental right were considered as a inviolable part of the Indian Constitution? ये आ गया फिर आपका केशवानंदा भारती के पास, सॉरी शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के बाद आ गया आपका गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब. एंड दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ये क्वेश्चन जो है आपके सिर्फ क्लैट या जुडिशरी में ही नहीं, आपके यूपीएससी में भी आपके थाउजेंड ऑफ टाइम ये पूछे जा चुके हैं. सो डोंट फॉरगेट दिस क्वेश्चन. Fundamental right considered as that. So it's a Golaknath versus state of Punjab. Basically, what does इसमें क्या held हुआ? इसमें इतना सा held हुआ कि these are the basic structure and cannot be disturbed. That's it. शंकरी प्रसाद ने बोला कि yes, you can, but the Golaknath ने बोला, Supreme Court ने no, you can't. ठीक है? In which landmark case the Supreme Court of India held that the power of a judicial review vested in the High Court under Article 226 and a right to move the Supreme Court under 30 is an integral and essential feature of the Constitution.
इसमें चंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। देखिए इसमें क्या बोला था सुप्रीम कोर्ट ने कि आर्टिकल 26 एंड 32 इज देखिए these provision in article 323A and 323B are unconstitutional because they deny a judicial review which is the basic feature of the constitution। ठीक है। Now which landmark constitutional case is known as a Mandal case? Indira Sahni versus Union of India। Everybody know, क्योंकि इस केस के बाद जो है ओबीसीज को आरक्षण देना शुरू हो गया था। Which landmark case of the Supreme Court talked about the Speedy trial? Hussain Nara Khatun versus Home Secretary of a State Bihar। In this case, the Supreme Court said that it should be speedy trial. Trial should be speedy, and legal aid service are the basic essential of the rights. Correct. Now the question number 18. In which landmark case the Supreme Court held that a Muslim woman have to right to maintenance? I think everybody is aware about this question कि ये आपका जो बड़ा फेमस केस हुआ था शाह बानू बेगम केस के बाद, इसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने, देखिए इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इस केस के बाद ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। इस केस के बाद मुस्लिम वीमेन को जो है आपका मेंटेनेंस राइट मिलना शुरू हो गया, और जो आर्टिकल और जो आपका सीआरपीसी में 125 है, और उसको बोला गया कि इट्स मतलब ये कोई धर्म से ताल्लुक नहीं रखता है, इसमें किसी भी धर्म की कोई भी जो है मैरिड वीमेन जो है वो क्लेम कर सकती है। ठीक है। बट इसको लेट स्टक डाउन किसने कर दिया था बाद में? जो आपकी कांग्रेस गवर्नमेंट आई थी राजीव गांधी के टाइम में, उन्होंने स्टक डाउन कर दिया। ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 19। इन विच लैंडमार्क लीगल केस कोर्ट एक्सप्लेन द प्रोविजन प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ? व्हाट इज किसके रिगार्डिंग प्रोविजन प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ? The correct Maneka Gandhi versus Union of India। Basically, इसमें क्या हुआ था कि procedure established by law under Article 21, Supreme Court held that the procedure in Article 21 has to fair, just and reasonable, not fanciful, oppressive or arbitrary। The procedure established by law is the same as the due process of law as interpreted by the which constitution? American Constitution। Now in which landmark case the Supreme Court held that the right to legal aid as a fundamental right? This is also very, very important. And Sila verse, correct option is yours, Sila verse versus Union of India। ठीक है। Now the question number 21. Under the Constitution of India, freedom of a religion. Under the Constitution of India, freedom of a religion does not give the power to conversion with money, regulate to law and order, health, morality। Now देखिए क्वेश्चन पूछ क्या रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रीडम ऑफ अ रिलीजन डज नॉट गिव द पावर टू कन्वर्जन विद मनी, या रेगुलेट लॉ एंड ऑर्डर, या हेल्थ एंड मोरालिटी। तो इसमें जो है आपका करेक्ट ऑप्शन जो है, देखिए बेसिकली रीजन क्या है इस केस में? India has given the right to freedom of religion, but set the right of a conversion only to the exercise under free will। ठीक है। अब यहाँ पे कन्वर्जन विद मनी इज योर राइट आंसर, क्योंकि ये जो है फ्री विल से नहीं होगा। ठीक है। सो द कन्वर्जन विद मनी विच among the following is not a part of the direct principle of a state policy? So it's obvious adult education is not the now the Parliament of India consists of I already told you parliament has the three things. One is president, one is your Lok Sabha, and one is your Rajya Sabha, which is upper house and lower house. So all of these, the correct option is your D. Power to summon the house of the parliament vested with the president.
correct? Right to pollution free. Actually, rest of the question I have discussed my earlier video, so please go through, and there you will find all these question, rest of the question up to 50. I think another question, protection improvement and safe harbor. No. These are some different. Okay. Where we were? Yes, here we were. 9. A right to pollution free environment comes under Article 21. Correct option is A. Who was the first law mission of the independent India? It's a B.R. Ambedkar. Okay. When was the secular added to the Constitution of India? Everybody know 42nd amendment जब हुई थी आपकी 1976 में, तो उस टाइम जो है आपका, so the correct option is D. Right to privacy is your fundamental right. Correct. Basically ये जो आपका केस पुट्टुस्वामी वर्सेस रिटायर्ड एंड अनदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस हुआ था, उस केस में इसको जो है फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी इज डिक्लेयर्ड एज अ फंडामेंटल राइट, मतलब राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया गया था. द फोर्थ शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज deals with the allocation of a seats in Rajya Sabha. Correct. Now, where do we find the phrase raising of a nutrition in? Actually, it is found in a directive principle of a state policy. Okay. Now, whether narco analysis or polygraph test without consent is. This is also very, very important question. इसमें prohibited in all case. This ये जो है क्वेश्चन नंबर 31, इसमें जो है आपका केजी द सुप्रीम कोर्ट ने बोला था रूल एनालिसिस मैपिंग एंड पॉलीग्राफ टेस्ट कैन नॉट बी कंडक्टेड ऑन एनी पर्सन विदाउट देयर कंसेंट. Such procedures are illegal and a violation of we are discussing whether narco analysis polygraph test without consent is actually it is a prohibited in all case. एक KG Balakrishna, Honorable Justice Chief Justice KG Balakrishna is a 3 judges bench जिन्होंने बोला था कि ये जो है prohibit किया जाएगा. ठीक है. Now the next question is your trafficking of human beings is the Constitution of India. Trafficking human being is a dash in the Constitution of India. ठीक है. Prohibited, permitted, in a certain cases regulated and permitted. So the correct answer of the question number 32 is prohibited. क्यों prohibited है भाई? This question must ask because जो Article 23 and 24 में Article 23 prohibits the traffic in a human beings and a forced labor such as a beggar. ठीक है. Writ of habeas corpus is a constitutional remedy, legislative remedy, executive remedy, or a quasi-judicial remedy. What is the correct answer? Habeas corpus में क्या में have a body? अगर किसी को legally detain करके रखा हुआ है, किसी को without any reason पकड़ के रखा हुआ है, किसी ने भी, तो writ of habeas corpus is your constitutional remedy is given to that person. A writ by which the decision of the lower court is quashed by the high court because it was based on an irregular procedure is known as mandamus, prohibition, certiorari, or warranto. Then certiorari is your correct answer. इसमें कुछ नहीं, अपर कोर्ट इतना सा पूछती है कि आपने जो ये ऑर्डर पास किया beyond going beyond your jurisdiction,
then show me your other. If it is not, then tell me how. Then this is the certiorari to show your certificate. Authority, on which authority? Now, directive principle of a state policy is the conscience of the constitution, which embody the social philosophy of the constitution was said by. It's the correct option is your Granville versus Granville Austin. Okay. Now, under the constitution, protection and improvement of the environment and a safeguard of a forest and a wildlife has been provided as a what? It's a directive principle. क्यों? क्योंकि आर्टिकल 48A, let me repeat you again, article 48A, protection and improvement of our environment and safeguarding of the forest and wildlife, ठीक है? और ये जो है आर्टिकल 48A was added under 42nd amendment. अगेन देखिए आर्टिकल 42nd amendment 1976, respect of a national flag. What is this? Respect of a national flag आपका फंडामेंटल ड्यूटी है हमारी, ठीक है? फंडामेंटल ड्यूटीज कहां देके रखी हैं? 51A. Which one of the following constitutional amendment was based on a recommendation of a स्वर्ण सिंह कमेटी? कौन सी अमेंडमेंट जो है वो स्वर्ण सिंह कमेटी के बेस पे हुई थी? तो देखिए इसमें कुछ नहीं है, बेसिकली कांग्रेस पार्टी ने इसको सेटअप किया था. इसमें जो आपकी द नीड एंड नेसेसिटी व्हिच वाज फेल्ट ड्यूरिंग द ऑपरेशन की इमरजेंसी के टाइम में government and center accepted recommendation and enacted the 42nd constitutional amendment. The amendment added a new part named the 4A up to the constitution, and the correct option is your C. ये बोल दो आप, 42nd amendment is your correct answer. सरवण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे हुई थी, ठीक है? और इसी को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है. चेयरमैन नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इज अपॉइंटेड बाय चेयरमैन ऑफ अ नेशनल. देखिए नेशनल ह्यूमन राइट का कमीशन का चेयरमैन कौन अपॉइंट करता है? देखिए इसमें प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, बेसिकली ये पावर जो है ये प्रेसिडेंट के पास है, ठीक है? It's a Article 123 give a special legislative power to the President of India by promulgating an ordinance under certain circumstances. ठीक है? The law-making power in a state is vested in the state assembly, but there may a situation when the state assembly is not in a session and it is necessary to make law. तो 213 में आपकी गवर्नर के पास, ठीक है? So the ordinance जो promulgate होता है वो आपका D, both A and B. देखिए इसमें जो है आपका आर्टिकल 123 जो है आपका आर्टिकल 123 आपका गवर्नर करता है और प्रेसिडेंट करता है, और आर्टिकल 213 इज योर गवर्नर करता है, ठीक है? 123 प्रेसिडेंट, 213 इज योर गवर्नर, ठीक है? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर 41. In which landmark case the former chief of the police of a state was held guilty of assault of a criminal forced woman with intent to outrage her modesty? This is a very, very, very famous case, and it is your IPS KPS Gill. What is Rupan Diol Bajaj? अब देखिए इस केस में बहुत ही ज्यादा आपके जैसे जो FIR रजिस्टर नहीं हो रही थी, तो इसमें जो है रजिस्टर्ड कैसी हुई, सुप्रीम कोर्ट तक केस गया. दिस इज वेरी फेमस केस रिगार्डिंग द क्रिमिनल प्रोसीजर आल्सो. In which landmark case the court ruled that grants cannot change the minority nature of the institution? Correct option is your ये सेंट स्टीफन वर्सेस यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली. इसमें क्या था? Court ruled in this important case that merely because government is giving a grant to the college will not change its minority nature. ठीक है? Refer Article 20 of the Constitution. Now,
In which landmark case the court held that the depiction of a preparation of violence is not a contravention of the Constitution? It's a Ramesh Dalal versus Union of India. Now, which important landmark case was the first one in which the conviction happened under the IT Act 2000? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा केस था आपका, ये था आपका तमिलनाडु वर्सेस शुशाकट्टी 2004. Now the question number 45. Which important landmark case laid that reservation cannot be provided in a private educational institution? Laid that a reservation cannot be provided in a private educational institution. ये था आपका PA इनामदार versus State of Maharashtra. Now the question number 46. Which important landmark case led to the first amendment of the Indian Constitution? ठीक है, तो ये था, the case was related to the reservation and B.R. Ambedkar made the first amendment to the Constitution. So the correct option is your 46 का D. Champakram. Now the question number 47. In which important landmark case the Supreme Court held out capital punishment of to Indira Gandhi assassination? ये 47 का आपका करेक्ट ऑप्शन है आपका सी, कहर सिंह वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन. This is a very important case in which the CM has been assassinated. Now, in which important landmark case the court held that Article 32 and Article 26 basic structure of the feature of the Constitution? 48 का correct answer आपका L Chandra Kumar versus Union of India. In which important landmark is a court held secularism to be the basic structure of the, मतलब सेकुलर जो है, मतलब हमारा जो समानता, इसमें धर्मनिरपेक्षता जो है वो आपका मुख्यतः बेसिक स्ट्रक्चर है आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का. करेक्ट ऑप्शन इज योर SR Bommai वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. Now the last question. In which landmark case the court held that the acid victim must be paid compensation? I think everybody is well aware and अब तो मूवी भी बन गई है इसके ऊपर, that is a Lakshmi versus Union of India. So this is the some important question. I think ये हर बार पेपर में पूछे जाते हैं. So please go through this question and please do like, share, subscribe this channel. It's some kind of a series with the parts. So please, for the more questions like important question, please subscribe, share this channel with your friends and homies. Thank you very much.